Salam everyone, welcome to my channel The U series with Unsa Malik. Today our topic of discussion is top best fields and their scope after FSc. Actually after FSc students face few problems about which field has more scope, which field is best to choose, like how to make right choice of subject for their university studies, and obviously which field is best for successful future. So here's come some best option and the choices one can have for future studies or the university studies after FSc. We can discuss them one by one with different fields and different perspectives we have. So let's have a look on different fields. Actually, there are 150 plus medical fields after FSc that we can study. So let's have a look on the different categories we have for the best career options after FSc pre-medical. After pre-medical we have four categories. So on first we have medical degree programs. Secondly, we have bachelor degree programs and the list of the some courses and diplomas we have to discuss in the next. Let's have a look on some medical degree programs and their scope. Actually, there are 150 plus medical fields जिनको हम स्टडी कर सकते हैं. टॉप बेस्ट मेडिकल फील्ड जिनको वन बाय वन हम डिस्कस करेंगे. फर्स्ट ऑफ ऑल वी हैव बैचलर्स ऑफ मेडिसिन एंड बैचलर्स ऑफ सर्जरी. यूजली हम इसको MBBS कहते हैं. MBBS इज़ अ प्रोफेशनल मेडिकल डिग्री जिसके अंदर ऑलमोस्ट ऑल एस्पेक्ट्स ऑफ साइंस कवर हो रहे होते हैं. ऑब्वियसली वो नो दिस इज़ अ वेरी रिस्पेक्टेड प्रोफेशन दैट हैज़ स्कोप बोथ इन प्राइवेट एंड गवर्नमेंट सेक्टर. सेकेंडली वी कैन गो विद द डॉक्टर ऑफ फार्मेसी जिसे हम डी फार्मेसी भी कहते हैं. इट्स ऑल्सो ए प्रोफेशनल डिग्री और यूजली ये डील करती है फार्मास्यूटिकल से. फार्मास्यूटिकल्स हम कहते हैं बेसिकली कि केमिकल एंड द मेडिसिन वी हैव अराउंड अस. thirdly we have doctor of physical therapy. डॉक्टर ऑफ फिज़िकल थेरेपी जिसे हम DPT भी कहते हैं. इट्स ऑल्सो ए प्रोफेशनल डिग्री. इसमें क्या होता है, फिज़िकल थेरेपी होती है अबाउट द मस्कुलर पेन्स और द मस्कुलर फिज़िकल मूवमेंट इश्यूज़. we can deal with that and the joint problem and etc. Fourthly, we have Bachelors of Dental Surgery. It's also a professional degree. We also know BDS. Dental surgery डील करती है डेंटिस्ट से. और डेंटिस्ट क्या डील करते हैं जी, हमारे टूथ एक्कीज, क्लीनिंग ऑफ टिथ एंड द सर्जरी एंड द प्रॉब्लम्स इन्वॉल्विंग इन द टिथ सेक्शन. दे आर नॉन एज बैचलर्स ऑफ डेंटल सर्जरी. On the next we have some degrees and their scope. Firstly we can look doctor of veterinary medicine. Professional degree है but it has scope in foreign countries. We usually involve this clinical knowledge जिसमें हम डॉक्टर्स यूजली इन्वॉल्व होते हैं या स्पेशलाइज्ड होते हैं इन एनिमल ट्रीटमेंट्स. डिफॉर्मेसी वी ऑलरेडी डिस्कस स्कोप है इसका प्राइवेट सेक्टर में, फार्मास्यूटिकल इंडस्ट्री में एंड द सेल्फ बिजनेस ऑल्सो. Thirdly, we have doctor of physical therapy. We already discussed about its muscular activities and the pain and the problems involving in the joints and the muscles. Fourthly, we have bachelors of homeopathic medicine and surgery. This is also a professional medical field, but in this we cure body on its own by increasing its immune system and by using natural minerals and the medicines. Actually ऐसी डिग्री है जिसके अंदर हम नेचुरल मिनरल्स एंड मेडिसिन एंड क्योर्स को यूज़ करते हुए बॉडी को हार्मलेस इफेक्ट्स होते हैं इसके, मतलब डिसएडवांटेजेस कोई नहीं होते. स्टिमुलेटिंग द हीलिंग प्रोसेस बाय यूजिंग मिनरल्स, नेचुरल एक्टिविटीज़ एक्सेट्रा एक्सेट्रा. This is also a degree that has scope in private sector and as well as self business. Moving on the next category, we have bachelor degree programs. Bachelor degree program usually we say 4-year degree programs होते हैं, 4 साला programs होते हैं जिनके अंदर हम अपने मेजर सब्जेक्ट को स्टडी करते हैं जो हमने चूज़ किया होता है. वट एवर वी चूज़, like we have there are 6 options for the bachelor degree program. First of all we have BS nursing. ये जितने भी हम सब्जेक्ट्स पढ़ रहे हैं या डिग्रीज़ को डिस्कस कर रहे हैं ये सब आफ्टर FSc प्री मेडिकल के बाद फर्स्ट ऑफ ऑल वी कैन डू BS नर्सिंग. ये भी एक प्रोफेशन है जिसके अंदर हम प्रोवाइड करते हैं पीपल को सपोर्ट सर्विसेज होती हैं बेसिकली हेल्थ केयर सेंटर्स में, हॉस्पिटल्स में एज ए नर्स. ये ओनली फॉर द फीमेल स्टूडेंट. स्कोप इसका प्राइवेट एंड गवर्नमेंट सेक्टर दोनों में है.
Secondly, we have Bachelor of Science. Bachelor of Science is also a degree that carries theoretical and practical knowledge, जिसमें हमारे पास कोई भी हो सकता है. हम इसको इस डिग्री में कंटिन्यू डिफरेंट सब्जेक्ट्स को कर सकते हैं, जिसमें हमारे पास मैथमेटिक्स होता है, फिजिक्स, जोलॉजी, केमिस्ट्री, बॉटनी एंड एनवायरमेंटल साइंसेज एंड पॉलिटिकल साइंस एंड एक्सेट्रा एक्सेट्रा. इसका स्कोप बोथ इन गवर्नमेंट एंड प्राइवेट सेक्टर है. थर्ड पे वी हैव BS बायोटेक्नोलॉजी. BS बायोटेक्नोलॉजी हमारे पास in BS Biotechnology, that is also a 4-year degree program, we discuss a broad area of latest technologies जिसको जो हमें हेल्प आउट करती हैं इन दी बायोलॉजी, इन दी ऑर्गेनिजम्स, इन दी हॉस्पिटल्स एंड डिफरेंट एक्सेट्रा. स्कोप इसका गवर्नमेंट एंड प्राइवेट सेक्टर इन बोथ टीचिंग एंड रिसर्च जॉब्स. ऑन द फोर्थ वी हैव BS Microbiology. This also involves the study of microscopic creatures like bacteria, viruses and fungi. एक माइक्रोबायोलॉजिस्ट बेसिकली होता है जो कि बायोकेमिकल एंड जेनेटिक एस्पेक्ट से हेल्प आउट करता है. स्कोप इसका बोथ गवर्नमेंट एंड प्राइवेट सेक्टर में है, टीचिंग में एंड रिसर्च जॉब्स में है. नेक्स्ट फिफ्थ पॉइंट पे हमारे पास है जी BS फूड साइंसेज. फूड साइंसेज अब हमारे पास क्या है, वी ऑल नो दैट फूड साइंस इज ऑल्सो रिलेटेड टू द न्यूट्रिशन and we get knowledge. It's also a 4-year degree program. Scope both government and private sector, teaching में भी and the research jobs as well. That research job basically हमारे पास labs में होती हैं. सिक्स्थ पे हमारे पास क्या है जी, सिक्स पे हमारे पास मौजूद है BS विजन साइंसेज. 4-year डिग्री प्रोग्राम है. इसका स्कोप है विजन साइंसेज. बेसिकली हमारे पास विजन से रिलेटेड होती हैं, ऑप्टिक्स से रिलेटेड होती हैं. हमारे पास कहाँ कहाँ हैं जी, गवर्नमेंट सेक्टर में, प्राइवेट सेक्टर में और सेल्फ कंसल्टेंसी, वहाँ पे इसका बड़ा स्कोप है. On the very next, we have some more bachelor degree programs that is also 4-year degree programs. First of all, we have BS honors in nutrition. आजकल न्यूट्रिशनिस्ट और डाइटिक्स बहुत ज़्यादा इन हो गई है, ट्रेंडिंग में जा रही है. सबसे पहले हमारे पास इसका स्कोप कहाँ है, गवर्नमेंट एंड प्राइवेट सेक्टर बोथ, टीचिंग में, रिसर्च जॉब्स में एंड सेल्फ कंसल्टेंसी में. नेक्स्ट वी हैव BS फार्मास्यूटिकल केमिस्ट्री. दिस इज़ ऑल्सो ए 4-year डिग्री प्रोग्राम. फार्मास्यूटिक्स में हम डील करते हैं, जैसे हमने DPharmacy में पढ़ा. इट्स ऑल्सो ए फॉर्म ऑफ दैट बट ए डिफरेंट डिग्री. गवर्नमेंट एंड प्राइवेट सेक्टर में, मैन्युफैक्चरिंग जॉब्स में, रिसर्च जॉब्स में. On next we have BS honors in medical imaging and technology. This has very scope एक्चुअली. ये बेसिकली इमेजिंग एंड टेक्नोलॉजी क्या है, हमारे पास एक टेक्नीशियंस की तरह एक जॉब है जिसका स्कोप हमारे पास क्या है, गवर्नमेंट एंड प्राइवेट सेक्टर में. बहुत सारी यूनिवर्सिटीज़ हैं जो अब इस डिग्रीज़ को ऑफर कर रही हैं और 100% श्योरिटी ऑफ जॉब है इन स्पेशली इन गवर्नमेंट सेक्टर. फोर्थ पे हमारे पास है बायोजेनेटिक्स. इट्स ऑल्सो ए डिग्री अबाउट द जीन्स एंड द जेनेटिक्स ऑफ ह्यूमन लाइव्स. स्कोप है इसका गवर्नमेंट एंड प्राइवेट सेक्टर एंड टीचिंग बोथ. Moving on to the next top best fields and the bachelor degree programs. Actually, we want to discuss the best fields and the best subjects we have to choose after FSc, pre-medical, for the university studies. University studies के लिए हमारे पास कौन से ऐसे सब्जेक्ट हैं जो कि बेस्ट हैं एंड विच इज़ द राइट सब्जेक्ट टू चूज़. नंबर 1 वी हैव BS ऑनर्स इन केमिस्ट्री. दिस इज़ ऑल्सो ए 4-year डिग्री प्रोग्राम्स. इसका स्कोप क्या है, इसके अंदर मेजर सब्जेक्ट हमारे पास केमिस्ट्री है जिसका स्कोप हमारे पास गवर्नमेंट एंड प्राइवेट सेक्टर बोथ, टीचिंग स्किल्स में, रिसर्च जॉब्स में एंड द लैब वर्क्स ऑब्वियसली लाइक फोरेंसिक लैब्स हैं एंड डिफरेंट वर्क ऑफ लैब्स. ऑन द वेरी नेक्स्ट वी हैव बायोकेमिस्ट्री. बायोकेमिस्ट्री में हमारे पास मेजर सब्जेक्ट होता है बायो प्लस केमिस्ट्री, लाइक द केमिस्ट्री विच हैव लाइफ. और इसका स्कोप है हमारे पास बोथ इन गवर्नमेंट एंड प्राइवेट सेक्टर, टीचिंग एंड रिसर्च जॉब्स. थर्ड वी हैव नैनो टेक्नोलॉजी. नैनो टेक्नोलॉजी इज़ ऑल्सो ए टाइप ऑफ टेक्नोलॉजी एंड द टेक्निक्स वी यूज़ इन गवर्नमेंट एंड प्राइवेट सेक्टर बोथ में इसका स्कोप है, रिसर्च जॉब्स में इसका स्कोप है. Fourth, we have BS honors in agriculture. Many universities offer this now, both government and private sector. BS clinical psychology. This is also very trending these days, which we study about in which we study about all the neurobiological processes in the program and the humans and individual behaviors and their treatment and different perspectives. We cover this and this is also very trending these days. BS clinical psychology, scope both in government and private sector, teaching and self consultancy. On the very next we have some other courses. उन स्टूडेंट्स के लिए जिनके अगर परसेंटेजेस हमारे पास
50% से भी कम है या लेस देन 50% या इक्वल टू 50% है, दे कैन गो फॉर दीज कोर्सेज लाइक BS Environmental Sciences. वो they can choose this. And the BScs is also a 4-year degree program in which हमारा मेजर सब्जेक्ट क्या होता है, कंप्यूटर साइंस होता है, स्कोप बोथ इन गवर्नमेंट एंड प्राइवेट सेक्टर प्लस टीचिंग. BSIT इज़ ऑल्सो वेरी ट्रेंडिंग दीज डेज. हम ये कर सकते हैं गवर्नमेंट एंड प्राइवेट सेक्टर में. BS Political Science, दिस ऑल्सो कवर सम पोलिटिकल पोर्शंस एंड द हिस्ट्री एंड द पास्ट, वट एवर इन द पास्ट वी हैव. उसके बाद नेक्स्ट वी हैव BS English Literature. दिस इज़ ऑल्सो ए 4-year डिग्री प्रोग्राम. एक्चुअली दिस गोज टू द आर्ट साइड. जिनके मार्क्स कम हैं तो वो फिर आर्ट्स का पोर्शन सेलेक्ट कर सकते हैं, जिसमें हमारे पास BS इंग्लिश लिटरेचर है, स्कोप बोथ इन प्राइवेट सेक्टर एंड टीचिंग. Moving on to the next, we have some other diplomas. Diplomas are like 6 months, 8 months, or 2 years diplomas. We have, first of all, we say that we have X-ray technician. This is also very important part of any hospital. जिसका स्कोप हमारे पास गवर्नमेंट एंड प्राइवेट बोथ सेक्टर में, एंड सेल्फ कंसल्टेंसी. एनेस्थीसिया टेक्नीशियंस वेरी इंपॉर्टेंट इन हॉस्पिटल्स एंड द क्लिनिक्स एंड प्राइवेट सेक्टर ऑल्सो. एमरजेंसी इंटेंसिव केयर सेंटर्स. Emergency Intensive Care Sciences, actually this is a diploma and there is a 4-year degree program we also know as a BS Intensive Care, जिसमें हमारे पास जो ये एक प्रोफेशनल डिग्री है जिसके अंदर नॉट ओनली प्रोवाइड स्किलफुल अवेयरनेस बट ऑल्सो इमीडिएट प्रेजेंस ऑफ माइंड एंड एक्टिवनेस टू परफॉर्म द right manner as people in this field with art with have to deal with the patients or and the technology we have. So this is also very important and iska scope both government and private sector and the consultancy, self consultancy. And next we have some common options that we usually hear: CSS and the LLB and BS Mass Communication. First of all, we discuss BS Mass Communication. BS Mass Communication is also a 4-year degree program in which we usually have like the मीडिया प्रोफेशन को कवर करता है, यानी कि हमारे पास एंकर्स एंड द न्यूज़ कास्टर एक्सेट्रा. सेकेंडली वी हैव LLB, इट्स अ लॉ डिग्री. Thirdly, we have CSS exams. This is very important and the most difficult exams. CSS actually stands for the Central Superior Services. This is a type of exam one have to clear between the age of 21 and the 30 years, but you cannot do it after FSc. This is an option. After FSc you can't do it. हाँ, आप इसको कर सकते हैं आफ्टर ग्रेजुएशन. ग्रेजुएशन के बाद आपके पास इनफ नॉलेज होना चाहिए टू डू CSS. This is all we have discussed today about the different professions and the fields and their scope. Hope so कि आपको इससे काफ़ी हेल्प हुई भी होगी. इंशाल्लाह नेक्स्ट हम बात करेंगे कुछ यूनिवर्सिटीज़ की दैट ऑफर डिफरेंट डिग्री प्रोग्राम्स इन एशिया, इन पाकिस्तान, इन इंडिया एंड एक्सेट्रा. टिल देन, अल्लाह हाफिज़ एंड गुड लक.